हो सकता है कि जब हम बात करेंगे सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम आखिरी टीम थी पहुंचने वाली, लेकिन यह बात सबको याद रखनी पड़ेगी कि फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम पाकिस्तान थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये जो मुस्कुराहट अब मेरे चेहरे पर देख रहे हैं, आपको हर पाकिस्तानी के चेहरे पर नजर आएगी, क्योंकि ये दिल की मुस्कुराहट है जो आज हमारे चेहरों पर अया हो रही है। थैंक यू वेरी मच cricket team, thank you very much for giving us this successful, amazing semi-final, and we just cannot thank Allah Almighty. I think what we really need to do is, जितने भी लोगों ने जितने नवाफिल मांगे थे, भाई टाइम सिरे पढ़ लो, फाइनल से पहले पढ़ लो, ताकि फाइनल में खुदा न खास्ता किसी किस्म की दिक्कत ना हो। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, 152 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे, जिसको 19.1 ओवर में पाकिस्तान ने अचीव कर लिया। 7 विकेटों से आज सेमीफाइनल जीतकर हम फाइनल में पहुंच गए। मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान, और मेरे साथ सभी वो लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की खुशी में शरीक है। ताली होनी चाहिए जोरदार। हेलो कैस, how are you doing today? Well, listen, I'm not going to match that energy because you are a Shaheen today. Thank you so much. She's a Shaheen today. We set that Pakistan pitch up in knockout game, third T20 World Cup final. And we know what happened in 2009 when they reached the final. They won. Yeah. So they're looking to become the second team behind West Indies to become 2 times winners of this T20 World Cup title. Hats off to New Zealand for reaching the semi-final. But you know what, guys? When you get to a knockout game, you got to play like Pakistan. Yeah, that's what it is. So congratulations to each and every one of you who's been out there praying for Pakistan. Thank you very much, Cass. You've been that support. But guess who said that, Pakistan will be good at chasing today? You did? Yes, I did. The thing is, you've been right so often that I think you have your own data analyst on the side that Rashi's not telling us about. Because you've been... भाईजान मॉर्निंग शो नहीं है, आ जाओ क्रिकेट के। सर आ रहे जरा हम जरा सेलिब्रेट कर ले पहले। No, but really, well done to you, because I think the last 3 games you've been right on the money. Thank you so much. Thank you very much for saying that. And without any further ado, जैसा कि हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान ने कहा कि भाई आज जरा हमारी तरफ भी वो भी अपनी खुशियों में आप सबको शरीक करना चाहते हैं। सबसे पहले ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी लकी टू हैव बीन जॉइंड बाय मिस्टर लैंस क्लूजर। लैंस, टफ लक। Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Thank you very much. Finally we have him in our corner too as well. Alongside him, खबतीनों साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर, ये है मिस्टर राशिद लतीफ। राशिद भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने भी पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बाहर जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत मुबारक हो। उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। उसी के साथ खबतीनों ज्यादा आगे बढ़ते, हो सकता है कि फाइनल में शायद इन्हीं के साथ हमारा मैच हो। उस दिन इनके लिए ये मुश्किल होगा तय करना कि उन्होंने कौन सी टीम को सपोर्ट करना है। खबतीनों साथ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स द वर्ल्ड हैज सीन, ही इज मिस्टर अजहर महमूद। अजहर भाई मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक आपको भी, पूरे पाकिस्तान को भी, और जितने लोग पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं सबको बहुत बहुत मुबारक। सुबह बोला था ये पाकिस्तान टीम वहां आएंगे कि सुबह क्या बोला था? सुबह ये बोला था सुबह, ये दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती, याद रखना। ये चालू करा लो पहले। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बन चुका है, एक सबब बन चुका है। खवातीन और हज़रात, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कदम रखे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सितारा जो है वो ऊपर ही की तरफ जा रहा है। यकीन माने ये जहां पे भी कदम रखे सितारा ऊपर ही जाएगा। फॉर्मर स्कीपर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर मोहम्मद हफीज। हफीज भाई मुबारक हो। आपको मुबारक, देखने वालों को मुबारक, पाकिस्तान मैनेजमेंट को मुबारक, और तमाम वो फैंस जो दुनिया में पाकिस्तान के क्रिकेट को मोहब्बत करते हैं, हम सबको बहुत बहुत मुबारक। और इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों को जिन्होंने, जो आपने बात की कि हमारी कामयाबियों में जो दुआएं हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल। तो उन तमाम लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ की, नफल मांगे, उनको पढ़ भी लिए, तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को जो है ना कलेक्टिवली मुबारकबाद। Thank you so much, Cass. You know what? Since the feeling over here today is very emotional, it's scintillating, and so I certainly fall short of words as well. So I would want you to take the lead today, because I'm just feeling very excited. I generally am good at taking the lead because women can remain calm. Win or lose, we can. I know that you can't remain calm, and I'll tell you who's not remaining calm. Yeah. Cricket Twitter is breaking the internet today. Trust me. And I've got to say a shout out to the fans, and we shouted out to them the other day when it wasn't going well. We said, keep backing your team, and this win has to be for the fans. Hafiz, you know as a player what it means to play for the fans, to play for the nation. Or what is your message to the fans about just the way they've stuck by this team? But I think it's all, I believe as a player, and
sharing it with you. Like every time we do perform, we always remember the fans with us, because their emotions, their expectations, their support is always there. And we always, while playing in the field, we always keep in mind, like the people are behind us. And this victory, this road to the final basically shows how important the support of the people are always with us. At certain stage, we were down like after losing the first 2 games. We all were thinking, when it comes to the brain, like Pakistan cannot make it. But as I mentioned, Pakistan team lives in the heart, and this performance reflects everything. That Pakistan reached to the final is because of the fans' expectation, because of the support we received, and obviously the belief on Almighty Allah. Like if we can work hard, we will reward it. So I believe that everything worked for Pakistan, and it shows the character of the team, like from the down and under, how they come up and how they perform well. Well, if you look at the stats and what it said about Pakistan, 43 for 4 against South Africa, at that stage, they had a 3% chance of making it through to the final. Azhar, stats out the window, because this team knows how to pitch up. Absolutely, absolutely brilliant. The way they bounce back, because no one gave them any right to be part of this World Cup. And, you know, like there's a lot of criticism, a lot of doubt on the team, doubt on the selection and everything. I think the way they bounce back, credit goes to all the team, the way they shown their faith on each other, and the process at that time. I think that's remarkable. I think if we heard of Babar and all the guys, you know, like talking about the self-belief in their self and believe it will happen. And the process, you know, like in the end, the process makes things easier for us. And we saw the 2 guys up front, you know, who were doing really well for last year and a half or 2 years for Pakistan, and they came today and they have a partnership of 100 runs. Well done to the team Pakistan and the management having the faith on the guys. Absolutely. Well, prior to today's game, only 3 times has 150 been chased in 17 T20 internationals at Sydney. And all those 3 times, the victories belonged to India. And I would have to say, I think you called 152 today, and we said it's a chaseable total. But Lance, was runs on the board. In a knockout game, you would generally back the team who's got the runs on the board. You think, put pressure in the power play. But the way Pakistan came out, like real titans, they wrestled the initiative away from New Zealand early on. You need enough runs on the board. And I don't think New Zealand did that. You know, runs on the board is one thing, but you need to have enough runs on the board. And I thought there was maybe even 25 at least runs that they were short, that they left out there. They were strangled by some fantastic bowling today. But the intent that and the energy that Pakistan batted with today was phenomenal. I mean, it was really just absolute standout from their last couple of games to what they did today. And you know, if I was their coach, I would show them. शायद आप थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर हुए, लेकिन सबने मिलके बॉलिंग बहुत अच्छी की, तो मैच नहीं था आज बिल्कुल भी, मिसमैच. Thank you very much for saying that. लेकिन जो सुबह एक बात बोली थी, बड़े वसूख से कहती कि 2 ऑपरेटर हैं पाकिस्तान टीम के, भले रन करें ना करें, बाबर और रिजवान ये ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को, प्लेइंग 11 से लेके मैनेजमेंट तक को, और आज बिल्कुल स्मूथ ऑपरेटर हुआ है. Exactly that. जी हफीज भाई, आप कुछ कहना चाहें? Without any doubt, I'm saying it, that the New Zealand is a strong candidate of sharing the tag what given to South Africa. Can we allow them to hold it on their own just for today? Just can we allow them? Trust can we me, not drag South Africa like today? from the New Zealand point of view, the way they started the game, they were tentative. They were not there as a team which we saw, like we watched them in the round games, and the way they believe on the basics. They were down and under, to be honest, from the mindset, and that shows, like, if in a knockout stage you don't express yourself, you don't play your aggressive cricket, you always get down. But and that's also, what the coach already, Zulu, said, like, you know, they were in the last 4-5 overs, obviously the Pakistani bowlers bowled very well, but the intent to go after the bowler was not there, which I watched it. So I think, as I said to you, like, they are very strong candidate of having the same tag. Yeah, and we'll come back to that. राशिद भाई, मैं एक और बात, जहाँ पे आपने मिसमैच की बात की है, I think जब हम सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं, न्यूजीलैंड विद कैच ड्रॉप्स एंड मिस फील्ड्स डिडंट रियली लुक लाइक कि शायद हमारा न्यूजीलैंड के साथ ही सेमीफाइनल हो रहा है. या तो प्रेशर उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया था, या दे weren't ready for this one. देखिए ना,
हाइपर एनर्जी जो होती है ना वो नजर आई पाकिस्तान टीम में। न्यूजीलैंड को करीब भी नहीं आने दिया पहले ओवर से लेके और आखिरी ओवर तक करीब कभी आए, क्योंकि हम जब जहाँ से उठे हैं ना वहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को वापस धकेलना। और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल बॉक्सिंग वाली है जो आज इन्होंने अपनाई है, ये क्रिकेट वाली नहीं थी। नॉकआउट की बात की मैंने, पावर प्ले में नॉकआउट किया है और बैटिंग में भी इन्होंने वही किया है, क्योंकि काउंटर अटैक ही बेस्ट डिफेंस है ना, अपने आप को डिफेंस करने के लिए अटैक कर दो। बिल्कुल उसमें बॉलिंग अच्छी की, शाहीन ने तीसरी बॉल पे आउट हुआ। जी आपकी प्रेडिक्शन मैं यही जानना चाह रहा था कि ये बात ऑन एयर कर दूं या ना करूं, लेकिन कर सकते हैं, तुक्के लगते हैं। मैं करता हूं। देखिए जी, आज मैच अभी पहली बॉल भी मेरा ख्याल नहीं हुई थी, तो राशिद भाई ने कहा था कि तीसरी डिलीवरी पे शाहीन की पहले ओवर में पहली विकेट गिरेगी। नहीं, ये नहीं बोला मैंने कहा मैं जा रहा हूं, कुछ हो तीसरी बॉल पे तो बता देना फोन करके। किसी का फोन ही नहीं किया, फोन ही नहीं किया, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, दूसरी पे भी हुआ, फिर तीसरी पे हो गया, दूसरी पे चांस हुआ और तीसरी पे हो गया। असल में हम स्टन हो गए ना उसको। मैंने कहा यार राशिद भाई तो अभी बोल के गए था कौन वो जी, आउट कौन जिसकी बात कर रहे थे हम सुबह में कि बड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। तुक्के लगते हैं जो, इसीलिए खामोश रहता हूँ। जी अजहर भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? आई थिंक जिस तरह अगर आप देखें जो अर्ली ऑन शाहीन शाह अफरीदी ने टॉन सेट की, जो राशिद भाई ने कहा अर्ली ऑन विकेट पे पहले बॉल पे उनको बाउंड्री भी लगी, इंटेंट उधर से भी वही था, लेकिन उसके बाद दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरीज जो शाहीन की थी हमने देखा, उस स्विंग उनको वापस मिला और जो उन्होंने विकेट ली। जैसे मैंने सुबह बात की थी कि आप जब टॉस हार जाते हो और आपको पता है कि 180 इज द पार्ट स्कोर, और आप कैसे, हमने वो दिखाया कि पावर प्ले में हमने He was hustling them just on body language. And when you look at New Zealand, every time you looked at Kane Williamson, he just had this grimace on his face. There wasn't a, come on guys, let's try to buy a wicket. I could hear Dale Steyn in commentary trying to buy a wicket for them. But they themselves on the field, the body language said it all. That Pakistan were just out there like, we're playing our best cricket. Exactly, and that's something which I'll have to agree with 110%, and it's because of that body language, it's because of that intent that we were able to kind of hijack them and that's psychologically what Hafiz said. too. You said this morning, didn't you? You need to agree on my words also. No, but you said the toss never decide the result. Absolutely. And the Pakistan given that attitude on the field and they won it. It's weird, it's like they listened to you this morning, Hafiz. With champion mindset, don't rely on the toss only. He said it this morning, and he was right though, because the way you spoke is how they played. Absolutely. Exactly. I know them very well. Yes, and they also knew. I mean, you know, everyone's talking about Matthew Hayden in the dugout. Yeah, one man doesn't win a World Cup for people. I think when you look at Babar's leadership, you look at Rizwan's leadership, you look at everyone took responsibility today. It speaks of a team that has true self-belief and a New Zealand team that buckled under expectation and pressure, because yet another semi-final. And they couldn't get to the final, although they had made back-to-back finals in 2019 and 2021. Listen, as a South African, we haven't even made a final, so hats off to New Zealand for getting as far as they did. But they'll look back at today and say, we won the toss. And as Lawrence said, we left runs out there. How important was Kane Williamson's dismissal? Because they just seemed like that partnership was gathering some momentum at the right time. Yeah, it was. And I think he was caught in two minds. He didn't know whether he needed to play that lap shot or whether he needed to line up a slog sweep. And when he got out, I could almost see in his mind, I should have done. Go there. I should have gone there. Even that side. And he was kind of caught in two minds. And I didn't see them really being decisive today. They were kind of a little bit conservative, hoping that they'd maybe pick up momentum towards the end. But you know, even a couple of those other dismissals weren't convincing to me. There were soft dismissals, people playing against the spin, obviously Kane being a little bit undecided. So yeah, a bit like South Africa, I don't think they turned up today. So you agreed in a way what I said. Hafiz, don't go there. Candidate. I'm going to dismiss him from the game, all right? No, we're going to come back to that. No, it's all right. I agree. All right. That's what I want. I thought that things are going to take I thought it was. I was going to call the match referee quickly to say get involved here. Exactly. But very quickly, Lance, this is something which I would want to ask you over here, because imagine that, you know, the way the pitch was being assessed by both the teams, I think there was something wrong with it, because everybody wanted to bat first if they would have won the toss. And I think that was a blessing in disguise for Pakistan not to get a chance to bat first. Yeah, I mean, absolutely. When you're putting a 100-run partnership up front, massive. Look, you in any run chase,
But when you're putting a 100-run partnership on a smallish score, it always looks easy towards the end. But definitely, I think they left 30 runs out there. It might have been a different game if Pakistan had to force the pace on that kind of surface. But because they batted so well up front, they were never under that pressure. Exactly. Same बात राशिद भाई आपसे भी पूछना चाहूँगा कि टॉस जीतकर जब दोनों कप्तानों की हमने सुबह भी बात की थी कि हम लोग की तैयारी ही इसकी थी। लास्ट 6 मैच में एक मैच हारे हम लोग सिर्फ चेजिंग ने, वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे 1 रन से, वो भी हमारी मिस्टेक थी। और न्यूजीलैंड 16 मैच हारा है, 16 मैच खेला है, 2 हारा है, ठीक है ना, दोनों दफा पाकिस्तान से हारा हुआ था, तीसरी दफा भी पाकिस्तान से हारा है, तीसरी दफा भी पाकिस्तान। तो तैयारी उन्होंने फर्स्ट इनिंग की थी, पर्चा सेकंड इनिंग का आ गया। तो वो पर्चे की तरफ भी बढ़ रहा हूँ। अब आपने कहा जी टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करना चाहिए पाकिस्तान को, भाई क्या सोच के कहा था? नहीं, वो तो आप जो विकेट पे नहीं, वो तो विकेट पे जो सबने यही कहा था, बिल्कुल यही कहा था और इसको ही करना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें, हम यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं वो कर सकते, कंडीशन जो है ना, तो यही बैठ के हम कहते हैं कि पहले बल्लेबाजी कर लो। हाँ, पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। मैंने आपसे ये कहा ना कि आपके जो पार्ट स्कोर था, आप 25 रन शॉर्ट थे, तो अगर 20 रन होते तो आप 19.1 ओवर में जाके आप मौका दें। पाकिस्तान वो टीम है जो पहले बैटिंग करते हुए भी बेहतर खेलती, वो चेजिंग में इनसे बेहतर है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब पूछ लें तो उसके बाद अगर आप गेम की सिचुएशन देखें ना कि कहाँ पे आपको, अगर आप सेकंड इनिंग में देखें, जैसे हमारा बॉल ग्रिप हुआ है, उनका बॉल वैसे ग्रिप नहीं हुआ, कंडीशन चेंज हुई है अंडर लाइट्स। जब आपने हैवी रोल लिया है, जब ड्यू थोड़ी सी उसके ऊपर आई है, तो पिच पे बॉल स्किड करना शुरू हो गया था। और इतने, जैसे आपने देखा रिजवान और बाबर के जो स्क्वायर ऑफ द विकेट बॉल शॉट लगे हैं, वो उसी की वजह से हुआ है कि जो आपकी ड्यू आने की वजह से बॉल बल्ले पे आना शुरू हो गया, तो वो आसान हो गया आपके लिए। और आपने फिर पावर प्ले बहुत अच्छा खेला, अगर क्योंकि बेस्ट टाइम है कि जैसे पहले भी अगर आप दिन का भी मैच हो तो बेस्ट टाइम है, नया बॉल है, बॉल उस वक्त आपका स्किड ऑन होता है, तो वही टाइम है कि आप उसको ज्यादा रन स्कोर कर सकते हो। जहां आपने स्लो किया, जैसे 6 ओवर के बाद जब आप पेस ऑफ करते हो, तो ऐसे पिच पे जहां बॉल थोड़ा ग्रिप हो रहा है, वो मुश्किल हो जाता है कि बॉल बल्ले पे नहीं आता, तो ईजी नहीं होता। अगर आप देखें न्यूजीलैंड की बैटिंग को देखें तो उनकी बाउंड्रीज कम थी। अगर आज उनके पहले 10 ओवर में उन्होंने 5 डबल रन बनाए, उसके बाद 16 डबल से उनके, तो अगर आप उसको देखें तो वो बाउंड्री नहीं लग रही थी, उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट से रन बनाए, जो मैंने सुबह भी बात की थी आपसे। There's a lot to unpack on this, because if you look at all the things that went right today, we go right to the beginning of the competition. Pakistan had never won a T20 international on Australian soil. They can't stop winning at the moment. So much has changed. We have so much to talk about, and looking forward to great comments from you as well on Twitter. We'll take a short break. It's the day of Pakistan cricket today, into the final, and since 1992, imagine returning back to Melbourne, and imagine if it's the same result. It's exactly what everyone's thinking about. Dil Dil Pakistan ringing out through the speakers at Sydney. And what did Babar say? It felt like a home game. Let's talk about Babar Azam for a moment, and everybody who needs to eat humble pie, because I think I backed him throughout the tournament. You did. I said I thought he was going to come good, but there was talk that Harris should perhaps be promoted to open. Just imagine how good it is for the selectors to say we stuck with them, and a 100-run partnership just setting it up. You know what, I'm actually going to be dead honest over here, and it's because of the fact that, you know, I've worked for a longer period of my life with Rashid Latif, who's always taught me to, you know, strike that balance. Imagine, you know, what those cricket pundits might be going through as of now, speaking of how to move the order, and, you know, probably, you know, if Harris can go open up as well. I think that we're earlier in the morning, you know, Rashid Bhai even spoke about it, that, you know, that's not even the sort of conversation we should be having. Yes. And that's why we avoided that conversation. And that's something which Matthew Hayden believed in. Imagine that, you know, he said it, that, you know, that it's going to be for Babar to kind of come outside and perform. And that's what they did. And I think that it was magnificent. He did got lucky initially. Yeah, but luck is part of the game. You've got to ride your luck and take your team to victory. The intensity that I saw on his face today, the belief that I saw, I felt like it was missing. And I guess when runs are lacking, Hafiz, and everyone's on top of you, it's a little bit difficult to kind of push your shoulders back and say all is okay. But today I saw the Babar Azam of old, and it was wonderful to see. No, he's a champion player. He's a proven product of Pakistan, obviously at international level. Wherever he goes, he shows that why he's been tagged as the #1 batsman in the world. And I think that's what we always say, like the class is always there. And he is one went in a right way to the Babar and also to the Rizwan. So they proven many wrongs. The mindset of the people who were talking about to change them,
and I think that shows the character and also the belief given by the management, because there were lots of things coming into from the social media, from the critics, but they kept on going with the two players, and they've proven it again that they are the #1 players. Exactly, and that's something which we would want to talk about as well. So Lance, I'll come on to you, and obviously, so the average power play score for Pakistan is 36, and that's something we have discussed prior to this match as well. And how do you think that that on one given day, when you know that it's a knockout stage, you come outside and you make an odd 55? Isn't that what Pakistan do, though? Yeah, that's what it is. I thought, as Professor touched on, the only thing that changed for me was the intent. They looked like they were out there to mean business. They were on their singles, and at one stage it just looked like New Zealand just couldn't bowl a dot ball. And that for me is the change. And once you start having good intent, you start to get into better positions at the crease as well. And none of those boundaries were slogs. They were all proper cricketing shots, good balance, found the gap, put the balls away, and that comes with intent, because now you're in a better position to deal with the bad balls. मैं अजहर भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ. अजहर भाई, दो चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ. एक तो ट्राई नेशन सीरीज हमारे लिए मुझे लगता है फायदेमंद हुआ कि हम न्यूजीलैंड गए और हमने खेला इनके अगेंस्ट. एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहता हूँ जो इंटरेस्टिंग होगी फॉर द लाइक्स ऑफ फखर जमान, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, Hassan Ali. These were the people who played the last semi-final as well last time around in the World Cup. Do you think that luck is on our side now? Yeah, definitely luck is on our side. जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, जिस तरह हुआ, अगर आप टूर्नामेंट में देखें कि हमने क्रिकेट इतनी बुरी नहीं खेली. जो हम 2 मैच हारे भी थे ना, उसमें क्रूशल एक जो हमने कहा था कि की मोमेंट, इंडिया वाली बात हम मानते, लेकिन जिम्बाब्वे के साथ की मोमेंट आपने विन करने की बात है. वो देखें, आप मिस्टेक करते हो, यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक. अगर आप वही मिस्टेक दोबारा दोहराते हो तो फिर प्रॉब्लम है. हमने अपनी वहाँ मिस्टेक से सीखा, और उसमें आप ये देखें कि मैंने जब पहले दिन बात की थी कि राइट मोमेंटम, तो आपका ये मोमेंटम जो है ना, उसके बाद जो बना है, अगर आप देखें 35 for 4 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहाँ से जो आपने अपना बिलीव शो किया है, जो वहाँ से वो शदाब की जो पार्टनरशिप थी, हारिस की वो जो पार्टनरशिप थी, वो नीचे से आके एफसी के जो रन्स थे, वो वहाँ से आपका सारा मोमेंटम चेंज होता है. और आपको यही चाहिए होती है, यही एक किक चाहिए होती है, जहाँ से आप जो है ना एक दूसरे लेवल की तरफ चले जाते हैं. तो यही हमें नजर आया थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट कि जिस तरह हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंस दी, उसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिली. अभी आप देखें कि अभी आपकी टीम और ज़्यादा डेंजरस हो गई है कि आपके ऊपर से भी रन हो गए, वो भी फॉर्म में आ गए, मिडिल ऑर्डर भी आपका, जो आपने मिडिल ऑर्डर बनाया है वो भी आपका, उनकी कंट्रीब्यूशन भी है इस टीम में. अभी जब भी आप देखें कि कोई एक बंदे की परफॉर्मेंस से आप यहां तक नहीं पहुंचे, गोगे हमारे साथ लक भी थी, सारा कुछ था, लेकिन एक बंदे की, यहां पे सब ने किसी न किसी बंदे ने 11 में से सब ने चिप इन किया है. और जब भी आप देखें कि हिस्ट्री में अगर आप देखें, जब भी कोई टीम जीतती है तो उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस 1-2 बंदों की होती है, लेकिन बाकी लोगों का चिप इन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जहां पे जिसकी जरूरत हुई है, जिस बंदे को हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, उसने चिप इन किया है. एग्जैक्टली. मैं अब राशिद भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ. राशिद भाई, आपका हमेशा बड़ा इन डेप्थ आप एनालिसिस करते, एनालाइज करते चीज़ों को, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और दिल्ली. अगर हम बाउंड्रीज के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान की 14 चौके थे, गालिबन 1 छक्का लगाया, उनकी तरफ से 10 चौके 2 छक्के लगे. आपको लगता है कि यही वो जगह थी जहां पे शायद पाकिस्तान उनसे बर्तरी हासिल कर गया था, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की भी अगर हम बात करें? नहीं, अगर पहली इनिंग्स देखते हैं ना, उसमें पाकिस्तान को बर्तरी मिल गई थी. हमारे मतलब की पिच थी, 150 रन शुरू में आउट होने अगर हो जाते तो शायद थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन जहां जरूरत थी वहीं 2 चले. ठीक है ना, करण अर्जुन की जो जोड़ी है ना, चल गई, तो उससे बड़ा फर्क पड़ गया. बाकी बाबर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इजाजत देंगे, क्या प्रॉब्लम कर रहा था और क्या चेंज किया अभी आज थोड़े मैच में जो देखा नजर आया. अकेले प्रैक्टिस भी करता है जी. बिल्कुल. हाँ, वो उसमें क्या था कि बाबर के आउट देखेंगे पहले अगेंस्ट इंडिया. ठीक है ना, अर्शदीप ने स्विंग की तो क्या है, ऑन साइड पे खेलते हैं यहाँ पे. ठीक है ना, राइट हैंड पे ज्यादा पावर है, यहाँ पे वो खेल के आउट हो गया. लेकिन जिम्बाब्वे अगर देखते हैं तो यहाँ पे बॉल हमेशा वो बॉल को यहाँ तक आने देते हैं. उन्होंने ये वो बॉल यहाँ से खेली है, अगर नोट करें, हफीज ओपनर है, यहाँ से खेली और एज होके गई है वहाँ पे. अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देखें, स्लोअर 1 पे यहाँ की बॉल को कहाँ लेके गए, यहाँ पे मिड में उसमें आउट हो गए, उसमें आउट हो गए. एक रन आउट हुए और एक फिर मारी और स्पिनर को यहीं से मारी. तो क्या है, जो उनका टॉप हैंड था वो काम नहीं कर रहा, जो मैंने जहाँ तक असिस्ट किया उनको.
वो बॉटम पे आ गए तो बैट को बंद किया था जैसे विराट कोहली ने 6 महीने पहले बंद किया हुआ था। तो यहाँ पे आज भी पहले बॉल देखें इन्होंने थोड़ा खोला है, लेकिन इस तरफ गए जो कैच छूटा उनका, बिल्कुल, और फिर उसके बाद उन्होंने सीधा चौका मारा है यहाँ पे।